गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है अनमास्किंग पॉवर्टी इन इंडिया। टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रीसेंट मंथ्स में इंडिया के पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो न्यूज़ में रहे हैं। गवर्नमेंट ने एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को क्लेम किया अप्रैल 2025 में कि 171 मिलियन पीपल को पिछले एक डेकेड में एक्सट्रीम पॉवर्टी से निकाल लिया गया है। वर्ल्ड बैंक ने अपने अपडेटेड पॉवर्टी एस्टिमेट्स निकाले, जिसमें कहा कि 5.75% इंडियंस ही जो है अब सिर्फ एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रहे हैं एज़ कम्पेयर टू 27% जो 2011-12 का फिगर था। तो पॉवर्टी लाइन क्या होती है? बेसिकली एक ऐसा इनकम थ्रेशोल्ड जिसको हम कंसिडर करते हैं पुअर को डिफाइन करने के लिए इकोनॉमी में। पॉवर्टी लाइन जो है वो टाइम और लोकेशन को वेरी करती है। कोई यूनिवर्सल पॉवर्टी लाइन ऐसे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। इंडिया की जो लास्ट रिकग्नाइज पॉवर्टी लाइन थी वो 2009 की तेंदुलकर कमेटी फार्मूला के बेस पर थी, जिसमें 2011-12 का आंकड़ा यूज़ किया गया। 2014 में रंगराजन कमेटी ने भी प्रपोज किया एक न्यू मेथड, लेकिन उसे कभी अडॉप्ट नहीं किया गया। इंडिया जो है अभी करंटली नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन पर डिपेंडेंट है। ज़्यादातर तो हम वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही फोकस रखते हैं। वर्ल्ड बैंक की पॉवर्टी लाइन रिफ्लेक्ट करती है कॉस्ट ऑफ बेसिक लिविंग, जिसको एडजस्ट किया जाता है पीपीपी के साथ, ताकि फेयर कंपैरिजन हो सके। 1990 में ये $1 का बेंचमार्क था कि मतलब अगर कोई $1 पर डे कमा रहा है या उससे कम कमा रहा है तो वो एब्जेक्टली पुअर है या एक्सट्रीमली पुअर है। और जैसे जैसे ग्लोबल प्राइसेस बढ़े, वर्ल्ड बैंक ने अपनी पॉवर्टी लाइन को अपडेट किया और अब जो है वो $3 पर डे का ये आंकड़ा है। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट डेटा दिखाता है कि इंडिया की जो पास्ट पॉवर्टी लेवल्स हैं वो ओवर एस्टिमेटेड थे, और वर्ल्ड बैंक ने जो न्यू पॉवर्टी लाइन जो $3 पर डे की अडॉप्ट की है उसमें 27% से घटकर सिर्फ 6% जो है वो पुअर पॉवर्टी लेवल पहुंच चुका है इंडिया का। इंडिया का जो एक्सट्रीम पुअर है वो डिक्लाइन हुआ है। 34 करोड़ जो 2011-12 में था वो अब 7.5 करोड़ रह गया है। कॉमन मिस्टेक हम क्या करते हैं कि पॉवर्टी लाइन को जो ये $3 का जो हमारा वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है इसको मार्केट रेट पे हम डिसाइड करने लग जाते हैं। नहीं, बट पीपीपी का कन्वर्जन अप्लाई होता है इसमें, जो कि 20.6 रुपीज़ पर डॉलर है। ठीक है। इसलिए लगभग 62 रुपीज़ के आसपास जो पर डे अगर कोई कमा रहा है, उससे ऊपर कमा रहा है, तो वो एक्सट्रीमली पुअर नहीं है। तो इंडिया की हिस्ट्री है पॉवर्टी रिसर्च की, लेकिन एस्टिमेट्स रेंज करते हैं जो कि कौन लोग पुअर हैं। 5.75% से 66% के बीच में ये आंकड़ा रहता है। क्यों इतना वाइड गैप क्यों है? क्योंकि हमारे कुछ ऐसी कन्फ्लिक्टिंग रियलिटीज़ हैं। जैसे 5.75% तो वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है, 24% जो है वो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए उन्होंने बनाया है, 20% जो है वॉलंटरी जो लेबर ऑफर कर रहे हैं मिनिमल वेजेस में वो इंडिया में प्रेजेंट हैं, 66% इंडिया में फ्री फूड रिसीव कर रहे हैं। 2024 में तो यूनियन बजट ने 12 लाख रुपए पर ईयर तक जो है वो टैक्स भी वेव ऑफ किया है। तो मतलब 3288 पर डे जो कमा रहे हैं तक जो कमा रहे हैं उनको गवर्नमेंट पुअर ही कंसिडर कर रही है, अदरवाइज टैक्स क्यों उनके लिए वेव ऑफ कर रही है। तो दो हम वेज से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं वर्ल्ड बैंक के डेटा को। पहले तो सेलिब्रेट करो कि ऑफ कोर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी में रिडक्शन ज़रूर हुआ है, लेकिन दूसरा ये देखो कि 83% ऑफ इंडियंस जो हैं अभी भी 171 रुपीज़ पर डे से कम में जी रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेविल FFD4 कॉन्फ्रेंस। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल लीडर्स जो है वंस इन अ डेकेड फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं सेविल स्पेन में, जो कि रिफॉर्म करना चाहते हैं ग्लोबल एड, टैक्स सिस्टम्स, क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रक्चर्स को। ये फोर्थ कॉन्फ्रेंस है जो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और ट्रेड लीडर्स को इकट्ठा लाएगी ताकि डेवलपमेंट चैलेंजेस को जो है वो एड्रेस किया जा सके। लीडर्स जो है 38 पेज का पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट जो है वो भी अडॉप्ट करने वाले हैं, जो कि नॉन बाइंडिंग रोड मैप होगा ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग का ओवर द नेक्स्ट डेकेड। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये तब आ रही है जब मेजर कट्स देखने को मिल रहे हैं वेल्दी नेशंस द्वारा, खासकर क्लाइमेट चेंज स्केप्टिसिज्म भी देखने को मिल रहा है। 2024 का जो सिविल कमिटमेंट था वो सपोर्ट करना चाहता है पुअरर नेशंस को, खासकर डेट रिफॉर्म्स करके, ताकि उनके जो है डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स हो सके, जिसमें कि डिज़ास्टर लिंक्ड हो सके डेट क्लॉजेस। फिर टैक्स पॉल्यूटर्स जो है टैक्स को पॉल्यूट करने वाले ऊपर जो पॉल्यूटर्स के ऊपर टैक्स लगाने का प्रपोजल है, या अल्ट्रा रिच पर प्रपोजल है ये टैक्स लगाने का। एक न्यू कॉलिशन बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि फास्ट ट्रैक हो सके इम्प्लीमेंटेशन ऑफ की गोल्स। लेकिन यूएस ने इससे विड्रॉल किया हुआ है, तो ग्लोबल कंसेंसस लाना बड़ा मुश्किल हो सकता है।
डिस्पाइट डिसएग्रीमेंट्स, कोई एक ब्रॉड इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है वो अर्जेंटली ज़रूरी है ताकि क्लाइमेट अडेप्टेशन फाइनेंसिंग हो सके वल्नरेबल कंट्रीज़ के लिए। यूएन का एस्टिमेट है कि लगभग $4 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ल्ड वाइड। मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो सिर्फ कुछ ही $100 बिलियन जो है वो मोबिलाइज कर पाए हैं। 2014 से अगर हम देखें तो एवरेज इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में लगभग डबल हुई है। चाइना के लोन बढ़ते जा रहे हैं अफ्रीका में, और रीपेमेंट जो है वो उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने सभी स्टेट्स को कहा है कि वो बर्थ सर्टिफिकेट्स जो है मदर्स को इशू करें जैसे ही न्यू बॉर्न चिल्ड्रन जो है वो आते हैं और बिफोर जो ये मदर्स डिस्चार्ज होती हैं हॉस्पिटल से। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का अगर हम देखें तो 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। तो ये सिस्टमैटिक कलेक्शन करती है स्टेटिस्टिक्स का, इंडिया की पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो ये जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है ये इम्प्लीमेंट करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969। ये ऑफिस ये जो है डेमोग्राफिक और लिंग्विस्टिक सर्विस भी कंडक्ट करता है और जो सेंसस होता है वो भी यही कंडक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं UN80 इनिशिएटिव। ये टॉपिक भी आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल जो हैं UN80 टास्क फोर्स के सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने UN80 इनिशिएटिव के बारे में बताया है। ये इनिशिएटिव रीअफर्म करना चाहता है वैल्यू ऑफ मल्टीलैटरलिज्म ऐसे टाइम पर जब कॉन्फिडेंस जो है वो लो है। UN की कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना चाहता है ताकि ग्लोबल चैलेंजेस ऑफ टुडे को मीट किया जा सके। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और ट्रांसपेरेंसी यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स में लाना चाहते हैं। 7 थीमेटिक क्लस्टर्स जो हैं वो बनाए जा रहेंगे UN80 टास्क फोर्स के अंडर, जो कि हर एक क्लस्टर स्पॉन्सर्ड होगा या कोऑर्डिनेटेड होगा बाय सीनियर UN लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फाकलैंड आइलैंड्स। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फाकलैंड आइलैंड के नीचे कहा जा रहा है कि एक बरिड फॉरेस्ट था जब ह्यूमंस और शीप वहाँ पर आए भी नहीं थे, उससे पहले ये फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता था। फाकलैंड आइलैंड को इस्लास मालवीनास भी कहते हैं और ये एक इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी है यूके की साउथ अटलांटिक ओशन में। 480 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट है ये सदर्न टिप ऑफ साउथ अमेरिका से। कैपिटल और मेजर टाउन यहाँ का है स्टैनली, जिसको ईस्ट फाकलैंड भी कहते हैं। कूल टेम्परेट ओशनिक क्लाइमेट है यहाँ पर और लैक ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है यहाँ पर। इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। प्राइमरीली फाकलैंडर्स जो हैं वो अफ्रीकन आयरिश डिसेंट के हैं। इकोनॉमी जो है वो फॉर्मरली बेस्ड थी एग्रीकल्चर पर, मेनली शीप फार्मिंग के थ्रू, लेकिन फिशिंग और टूरिज्म करंटली यहाँ पर बल्क ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंप्राइज करती है। कई बार आइलैंड जो है वो फ्रेंच की टेरिटरी में था, फिर ब्रिटिश की, फिर स्पेनिश, फिर अर्जेंटीन की। ब्रिटिश ने 1833 में यहाँ पर अपनी सवरैनिटी इस्टेब्लिश करी और अप्रैल 1982 में अर्जेंटीन फोर्सेस ने टेम्पररीली इस आइलैंड्स को ऑक्यूपाई किया था। मोस्ट फाकलैंडर्स जो हैं वो चाहते हैं कि वो यूके का ही पार्ट रहें। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी जो है यहाँ की वो ब्रिटिश क्राउन के पास है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक एक्टर है रिसेंटली, सलमान खान, उन्होंने रिसेंटली रिवील किया है कि वो मल्टीपल सीरियस हेल्थ कंडीशंस इंक्लूडिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को फेस कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंटेंस पेन होता है, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया हो एक साइड ऑफ द फेस पर। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व को अफेक्ट करती है, जो कि सिग्नल कैरी करते हैं फ्रॉम द फेस टू द ब्रेन। ये तब होती है जब एक ब्लड वेसल प्रेशर पुट करती है ट्राइजेमिनल नर्व पर। ये पेन एकदम से आती है, ठीक है, सिंपल एक्टिविटीज़ से, चाहे ईटिंग हो, ब्रशिंग टीथ हो, इवन स्माइलिंग से आ जाती है। तो ये धीरे धीरे पेन वर्स होने लगती है, लॉन्गर पीरियड्स ऑफ पेन रहने लगते हैं। मोर कॉमन है ये विमेन में या फिर पीपल जो कि 50 से एज ज़्यादा के हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2025, जिसको हम वर्ल्ड ड्रग डे भी कहते हैं। हर साल जो 26 जून को जो है ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबलीज को 1987 में इसको डिक्लेयर किया था। इस साल का थीम था ब्रेक द साइकिल, स्टॉप ऑर्गेनाइज क्राइम। UNODC जो है वो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट भी इस समय पर पेश करता है। तो इस बार की जो ड्रग यूज स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है वो कह रही है कि 300 बिलियन पीपल 15 से 64 की एज के बीच में उन्होंने ड्रग्स यूज़ किए हैं पिछले साल में। कैनबिस जो है उसका यूज़
25% बढ़ा है पिछले लास्ट डेकेड में। ग्लोबल ड्रग ट्रेड जो है वो लगभग $400 बिलियन एनुअली जनरेट करता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं K6 मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है। न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, हैदराबाद में इनकी लैब है। जो हाइपरसोनिक SLBM है जिसकी मैक 7.5 तक की स्पीड होगी, मतलब 9000 प्लस किलोमीटर्स पर आवर। और ये एनिमी का रिएक्शन टाइम, इतनी ज़्यादा स्पीड जो है एनिमी का रिएक्शन टाइम उसको कम करने में हेल्प करेगा, और इंटरसेप्शन जो है वो लगभग इम्पॉसिबल होगी इसकी। K6 मिसाइल जो है वो इम्प्रेसिव रेंज है इसकी, लगभग 8000 किलोमीटर्स की। इसको डिज़ाइन किया गया है विद मीर कैपेबिलिटीज़, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is unmasking poverty in India. This topic is important for your social issues. So in recent months, India's poverty statistics have gained attention. Okay, so government in April 2025 had announced that, as per the World Bank report, of course, uh, that 117 million people were lifted out of extreme poverty over the past one decade. And later, the World Bank also updated its poverty estimates, stating that only 5.75% of Indians now live in abject poverty, which this figure was 27% in 2011-12. So, what is poverty line? It's the income threshold which is used to determine who is considered poor in a given economy. Poverty line varies with time and location. There is no universal poverty line. India's last recognized poverty line was based on 2009 Tendulkar Committee formula using 2011 and 12 data. In 2014, the Rangarajan Committee proposed a new method, but it was never formally adopted. India now relies on Niti Aayog's multidimensional poverty index or the World Bank's poverty line. The World Bank's poverty line is increasingly used to estimate poverty trends in India. So World Bank's poverty line reflects the cost of basic living, which is adjusted to each country's purchasing power parity or PPP. Okay, in 1990 this figure was $1 a day, and now in 2025 it has been revised to $3 per day. Okay, India's so remember that $3 per day cannot be equated with the market price of the dollar. It has to be adjusted with the PPP rate, which is about 20.6 rupees per USD. So therefore, India's extreme poverty line equals 62 rupees per day. Okay. So World Bank's latest data shows India's past poverty levels were overestimated, and World Bank's new $3 per day estimation has put India's poverty level from 27% of 2011-12 to 5.75% now. Okay, India's extreme poor have also declined from about 34.4 crore in 2011-12 to 7.5 crore now in 2022-2023, which is a significant improvement. So, like I told you earlier, a common mistake is that people start converting $3 using the market rate, but in estimation of poverty line, PPP conversion applies, which is about approximately 20.6 rupees per dollar. Okay, which reflects the actual purchasing power. So, despite India's history of poverty research, estimates range from 5.75% to 66%. Why? Because we have several realities here. Multiple measures we have adopted. First is, of course, the World Bank's $3 per day poverty line. Then we are also witnessing that 24% is that poverty benchmark for lower middle income countries by the World Bank itself. 20% are in India are voluntarily offering labor for minimal wages. 66% people in India are receiving free food under government schemes. So these diverse indicators present a conflicting a picture of poverty. Okay. So 2024 union budget has also waived tax for those who are earning up to 12 lakh rupees per year. So what can we say about it? Does the government consider them as poor? So there are two ways to interpret the World Bank data. First is to celebrate the reduction in extreme poverty, which is of course a reality. And second is to reflect on the broader economic hardship, because 83% of Indians are living on just 171 rupees per day.
So the next topic is Civil FFD4 conference. This topic is important for your social issues and also your international relations. So global leaders will begin the once in a decade financing for development conference in Seville, Spain, to reform global aid, tax systems, and climate finance structures. So this conference will bring together political, financial, and trade leaders to address key development challenges, including aid, trade, and debt. Leaders will adopt a 38-page political document, which will be a non binding roadmap for development financing globally for the next decade. So, this FFD4 convenes amid major aid cuts by wealthy nations and climate change skepticism from influential leaders like US President. 2024 Seville commitment aims to support poorer nations by including debt for climate swaps and disaster linked debt clauses. Proposals are there to tax polluters or the ultra rich. A new coalition building mechanism is also being envisaged to fast track implementation of key goals. But the US withdrawal weakens the global consensus. Tensions also persist over global debt frameworks. Despite disagreements, there is broad international agreement on the urgent need to scale up climate adaptation financing for vulnerable countries. UN estimates that about 4 trillion shortfall is there in financing for sustainable development worldwide. Multilateral development banks have mobilized only a few $100 billion. Since 2014, average interest cost for developing countries have nearly doubled as a share of their tax revenue, straining public finances. Okay. So the next topic is Registrar General of India. This topic is important for your governance section. So Registrar General of India has recently asked all the states to ensure that birth certificates are issued to the mothers of newborn children before they are discharged from hospitals, particularly government-run hospitals. In 1949, we saw the government of India establish this permanent organization under Ministry of Home Affairs, which was headed by the Registrar General and ex officio Census Commissioner of India. The position's role is primarily to ensure a systematic collection of statistics related to India's population size, growth, and distribution. Registrar General of India is also responsible for implementing the Registration of Births and Deaths Act 1969. This office also conducts demographic and linguistic surveys in addition to the decennial census. Okay. So the next topic is UN80 initiative. This topic is important for your international relations. So recently, UN Under Secretary General for the UN80 task force spoke about the UN80 initiative, which wants to reaffirm the value of multilateralism at a time when confidence is low and the needs are high. So it aims to strengthen the UN capacity to meet the global challenges of today, and the objective is to improve the efficiency, effectiveness, and transparency of the UN system. Under this initiative, 7 thematic clusters are formed under the UN80 task force, each coordinated by senior UN leaders from across the system. Okay. So the next topic is Falkland Islands. This topic is important for your international relations. So beneath the stern exterior of the Falkland Islands, researchers have just uncovered a buried forest which flourished long before humans or sheep ever set foot on the archipelago. So Falkland Islands are also called the Islas Malvinas. They are an internally self-governing overseas territory of the UK in the South Atlantic Ocean. It lies about 480 kilometers northeast of the southern tip of South America. The capital and major town here is Stanley on East Falkland. So it has a cool, temperate oceanic climate, which is characterized by its lack of extremes. The population is English speaking, and it consists primarily of Falklanders of African Irish descent. The economy was formerly based on agriculture, mainly sheep farming, but fishing and tourism currently comprise the bulk of economic activity. At various times, the islands have had French, British, Spanish, and Argentine settlements. Britain reasserted its rule in 1833, although Argentina maintained its claim to the islands. In 1982, Argentine forces temporarily occupied the islands, but most of the Falklanders favor the archipelago remaining with the UK. Executive authorities also vested with the British Crown. The next topic is trigeminal neuralgia. This topic is important for your social issues. Recently, an actor has revealed that he is currently suffering from multiple serious health conditions, including trigeminal neuralgia. So, trigeminal neuralgia is a condition which causes intense pain similar to an electric shock on one side of the face. It affects the trigeminal nerve, which carries signals from the face to the brain. It happens when a blood vessel puts pressure on the trigeminal nerve. The pain comes suddenly. It gets worse, causing longer periods of pain, which happens more often than. It is more common in women and people who are older than 50.
So the next topic is World Drug Day or International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2025. So Department of Social Justice and Empowerment has observed the World Drug Day, which is marked on 26th June every year. So it was established by the UN General Assembly in December 1987. The theme for 2025 is Break the Cycle, Stop Organized Crime. So UNODC issues the World Drug Report, and this year the report says that 300 million people aged between 15 to 64 have used drugs in the past 1 year. Cannabis use has increased by 25% in the last decade. The global drug trade generates over $400 billion annually. So the next topic is K6 missile. This topic is important for your security section. So in a major boost to the strategic deterrence and naval capabilities, India is developing the K6 hypersonic submarine launched ballistic missile. This is a nuclear capable submarine launched ballistic missile under development at DRDO's Hyderabad lab. So it's a hypersonic SLBM which will be capable of speeds up to Mach 7.5, which is approximately 9 to 61 kilometers per hour. So this staggering speed reduces enemy reaction time, and it makes the interception by missile defense systems almost impossible. The K6 missile boasts an impressive range of about 8,000 kilometers, and it is being designed with MIRV capabilities also. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.